Good morning, students. How are you? I hope all of you fine. As we are going through the chapter working of institution. In previous videos, we have discussed different institutions about parliament, president, prime minister. Today, we will discuss the most important institution, judiciary. In a democratic country, judiciary is the very important and powerful institution. Judiciary is independent and a powerful institution. The judiciary, all of you know very well, कोर्ट न्यायालय का वर्क क्या है. The judiciary is responsible to solve the disputes between the citizen and citizen, between the citizen and government, sometimes the disputes between two states, and sometimes the disputes between the governments at central level and also the state level. So to solve all these disputes, we need the judiciary. अगर कोर्ट नहीं रहेगा तो कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उस पर कौन डिसीजन लेगा, इसके लिए जो है जुडिशरी की बहुत जरूरत है. अब इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है? Imagine the situation, judiciary comes under the control of government. In that situation, judiciary can take the right decision because the judiciary is working under the government. So that is the reason judiciary needs a independent and powerful. अगर जुडिशरी को गवर्नमेंट के अंदर कर दिया जाए तो क्या गवर्नमेंट के किसी मेंबर को, किसी मंत्री को कोई पनिशमेंट मिल सकती है? जाहिर है कि उस पर कोर्ट जो है अपना डिसीजन पूरी निष्पक्षता से नहीं ले पाएगा. यही रीजन है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और पावरफुल रखा गया है. राइट? इन इंडिया, you know very well that there are three levels of the judiciary. The first and Supreme Court, then at the second level High Court, and third level is the District Court. Supreme Court, if we talk about the highest form of the court in our country, in India, the Supreme Court is the apex highest Supreme Court. Decisions binding on all courts means Supreme Court के द्वारा लिया गया डिसीजन बाकी सारे कोर्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है. If any decision is given by High Court and then it comes in the Supreme Court, then the decision given by Supreme Court will be implemented in comparison than state or High Court. अगर कोई डिसीजन हाई कोर्ट में ने दिया, उस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दूसरा डिसीजन दिया, तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली जो पहले का डिसीजन है हाई कोर्ट के द्वारा वो हट जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन एक्सेप्ट किया जाता है और इम्प्लीमेंटेड किया जाता है. तो डिसीजन of Supreme Court binding all the courts of India. And Supreme Court other work, transfer the High Court judges. Supreme Court is supervise the functions of all the High Courts, right? And if the Supreme Court finds any problem in that situation, to transfer the judges of High Courts is done by the Supreme Court. Supreme Court has the authority to transfer any case फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. किसी हाई कोर्ट से अगर उसको लगता है कि डिसीजन को यहाँ से ट्रांसफर करके किसी दूसरे कोर्ट में जाना है, उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसीजन ले सकता है. नेक्स्ट थिंग, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू कॉल ए केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी डिसीजन में वो डिसीजन उसको लेना चाहिए, उस सिचुएशन में वो उस किसी भी केस को अपने कोर्ट में बुला सकता है. Right? So in this way, Supreme Court is the highest authority of court in our country, highest judicial authority. अब अगर हम बात करें सेकेंड लेवल की कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स, एंड देन एट द लोअर लेवल, लोकल लेवल, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. हाई कोर्ट hear the appeal from the lower courts. High Court also supervise and controls the lower courts, means the district courts. The High Courts
डील इन केसेस विद इन द स्टेट जुडिडिकेशन, स्टेट के जो जुडिडिकेशन जो क्राइटेरिया है, जो उसका एरिया है, उसी के आधार पे हाई कोर्ट डिसीजन लेता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील विद द लोकल केस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? सो दिस इज द 3 लेवल ऑफ द कोर्ट एट द टॉप। इफ वी टॉक अबाउट द ये 3 कैटेगरी ऑफ द कोर्ट, राइट? देन फर्स्ट दिस इज द टॉप लेवल, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, and third district court. In country, in India, there is only one Supreme Court. The decision of district court can be challenged in the high court. The decision of high court can be challenged in the Supreme Court, but the decision given by Supreme Court cannot challenge to any court of India. Supreme Court के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको हम दोबारा किसी भी और कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री बिकॉज द जुडिशरी वर्क एज ए गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी check and find out that all the decision taken by government in through the constitution, according to the constitution. If the judiciary found that any decision taken by legislative or executive, by state government or central government, in that situation is against the constitution, in that situation judiciary has the power to interrupt in that policies and these decision. The judiciary has the power to stop that decision. Clear? अगर मान लीजिए जुडिशरी को लगता है कि कोई डिसीजन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उस सिचुएशन में जुडिशरी के पास ये पावर है कि उस लॉ को बैन कर दे या उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर दे। राइट? अगर उसको लगता है कि ये रॉन्ग है तो उसको बैन करने का भी उसे पूरा अधिकार है। तो इस तरह से जुडिशरी वर्क एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल जुडिकेशन, the judiciary takes a decision in every disputes, whether it is, I have already told you, in any disputes in the country solved only by the judiciary. Defender of federation, जो हमारी कंट्री का फेडरल सिस्टम है, राइट, 2 or more level of government, राइट, this is defended by the judiciary. Judiciary find out that there is federal system in the country running continue, not only any central government forcing to the state government. दोनों गवर्नमेंट्स के जो उनके पावर है, जो उनके क्राइटेरियाज हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वो डिसीजन केवल वही ले सकते हैं। जुडिशरी इज आल्सो नेसेसरी फॉर इंप्लीमेंटिंग द राइट्स टू द सिटीजन। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट सम फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू all the citizens of India. So judiciary find out that all these rights are provided to all the citizens. Judiciary takes the decision in both type of the cases, whether it is the civil cases or the criminal cases. Advisory jurisdiction, judiciary has the, sometimes the president needs the any advice, in that situation judiciary work as a advisory jurisdiction. Review, कोई भी डिसीजन लिया गया उसको रिव्यू करने का राइट्स जुडिशरी के पास है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट, ऑल द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द जुडिशरी। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, किसी भी मैटर में जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको रिव्यू करने का राइट्स जो है जुडिशरी के पास है। एंड इन इंडिया जुडिशरी इज पावरफुल बिकॉज द जुडिशरी can order to both, whether it is the legislator or executive. Judiciary has the power to give order both, whether it is the legislative or the executive, but the no one can order to the judiciary. मतलब कि जुडिशरी कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोर्ट को ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोर्ट को ऑर्डर देती उस सिचुएशन में तो जुडिशरी अपना वर्क सही से नहीं कर पाती, उतनी फ्रीडम उसके पास नहीं रहती। इसके अलावा द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट आफ्टर अपॉइंटमेंट द जजेज आर नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट।
ये सच है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस की, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, बट एक बार अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट खुद भी चाहे तो उनको रिमूव नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, सॉरी, जजेस कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। Through the process of impeachment, the Supreme Court judges can be removed. In this process, the two-third majority, with two-third majority from both houses, whether in Lok Sabha and Rajya Sabha, दोनों हाउसेस से टू-थर्ड मेजोरिटी के साथ जब वो प्रस्ताव पास होगा तब जाकर के जज को हटाया जा सकता है, अदरवाइज द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव टू द जजेस। एंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टुडे वीडियो, दिस इज द क्वेश्चंस फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इंडियन जुडिशरी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाउ कैन ए जज बी रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? थर्ड, व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू क्या है? फोर्थ, व्हाट डज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है? मीन्स जुडिशरी आर द इंडिपेंडेंट, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव नॉर एग्जीक्यूटिव। एंड लास्ट, explain the powers of Supreme Court of India. So you have to write these answer of these questions, and in the next video we will talk about the next chapter start, right? The next chapter will be the climate. Thank you. Have a nice day. you.